कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं किया? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या है? सर हम समझ नहीं पाए। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक। बीटेक किया आपने, आईएएस है। जी सर। आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। यू सेंट योर जूनियर, योर कलीग टू फाइल एफिडेविट, वाई? माय लॉर्ड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नो नो, सॉरी कांट मेक अ डेड मैन अलाइव, मिस्टर सौरभ। मैं आपका सर सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो आपने क्यों नहीं किया? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या है? सर हम समझ नहीं पाए। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक। बीटेक किया आपने, आईएएस है। जी सर। तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। सर आई ठीक एम है, आप पे लिख देते हैं कि आप में एबिलिटी नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्डर ऑर्डर में लिखा देते हैं। यू हैव नो एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑर्डर्स पास्ड बाय हाई कोर्ट। प्रोफेशनली सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो आपने बताया वही लिखाएंगे। आई एम फेयर फेयर इनफ। ऐसा मत सोचिए कि हम आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर करेंगे, सॉरी। ऐसा हमारा इंटेंशन भी नहीं है। हम आपने जो बोला है उसी को लिखा रहे हैं। यू कुड नॉट इंटरप्रेट द ऑर्डर इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। सर दैट इज नॉट व्हाट माय इंटेंशन वाज। इंटेंशन, but you said so right now. सर आई माइट हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। No, no, you said so. There is recording. I'm extremely sorry, sir. I might have used the wrong words. You said correct word. You couldn't interpret the order, and I'm going to observe what you have stated before this court. My lord, I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन आईएएस, ठीक है। यू आर सीओ ऑफ एनआरडीए, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यू कैन डू वट एवर यू थिंक। You can grant lease to anyone, though the petition is pending before this court. You can flout the order passed by this court, whereby you were directed to file your own affidavit. You sent your junior, your colleague, to file affidavit. Why? My lord, I'm extremely sorry for that. No, no. Sorry can't make a dead man alive, Mr. Saurabh. You are appearing before High Court. Why you sent your subordinate to file affidavit? Tell me. Tell me the reason. एंड उन्होंने एफिडेविट में क्या कहा है? कल आई यस्टरडे आई वाज इंटरप्रीटिंग दैट ऑर्डर। इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है। ये क्या है? ये आपका जवाब क्या है? ये एफिडेविट क्या है? ये आपने ऐसे ही बोला था उनको लिखाने के लिए। सी फाइल्ड एफिडेविट ऑन योर इंस्ट्रक्शन as you were directed to file affidavit, your own affidavit. You sent someone else. Who is that officer? Call him. हमको बुलाने के लिए आपको हमको कोई खुशी नहीं होती है कि आपको बुलाएं हम, पर जब आपने ये किया कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर दिया, आपको हमने बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपने खुद फाइल नहीं किया। एप्लीकेशन भी कोई मूव नहीं आई एग्जाम्पशन के लिए कि ही वॉज बिजी और कोई भी रीजन, तो आपने वो भी फाइल नहीं किया और उन्हें आप भेज दिए। यस मैडम, आइए, आप सामने आइए। आपने क्या लिखा है पैरा 3 में? प्लीज रीड लाउडली। That the land at measuring सो एंड सो स्क्वायर मीटर्स square meters allotted to the Nucleus Tech Consulting Private Limited intervener is another land parcel which is not subject. बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इज अनदर लैंड पार्सल विच इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्टेंट रिट पिटीशन। जो आपने लीज दिया है ये सब्जेक्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है ना? यस, आगे पढ़िए। Very negligible part as stated above is included in the total land parcel allotted to the Nucleus पर Tech. थोड़ा सा जमीन उसमें से दे दिया है आपने। कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके एफिडेविट की नहीं है? कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट और सही। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट।
misguiding affidavit. Why action should not be taken against you? What is your status? What is your status? हाँ? असिस्टेंट मैनेजर। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता है कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है, तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट। आई एम सॉरी टू से। यस भैया बताइए, पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था, आपने लीज क्यों दिया? ऑन हुज स्टांस लीज वाज ग्रांटेड टू दैट पर्सन? टेल मी, हु टोल्ड यू टू ग्रांट लीज? The lease was granted in December 2023. Who told you to grant lease to that person, that authority? My lord, technically I was not posted at that point of time, but there is a What record says? According to record, why lease was granted to? My lord, the lease was granted on the basis of a committee that It was, the decision was taken by committee, yes, my and lord, it's in power pursuant to committee. decision taken by committee, you granted lease to क्या टेक है वो? न्यूक्लियस टेक। Critic, my lord. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर। देख लीजिए आप, पिटीशन पेंडिंग हाई कोर्ट में, उसके बाद भी आपने लीज दिया है। कैसे दे दिया आपने? कमेटी में कौन कौन है? सबको कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सबको इम्प्लीट करिए रेस्पोंडेंट्स, एंड आई विल पास ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ कमेटी। The CEO might have acted bona fide. He followed the directions, instructions, or orders, decision taken by the committee, and he granted lease. But how the members of the committee can take such decision when the matter is pending sub judice before this court? Unnecessary, you are creating problem for yourself and for petitioner also. Sir, Miss Kiran Kaushal was. Where is he? See, at present, where is he? My lord, she is in health right now, health department. करेंगे क्या आप इसमें, बताइए अब आप। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे? यू हैव ऑलरेडी ग्रांटेड लीज। इफ हिज पिटीशन इज अलाउड, देन इनके लीज का क्या होगा? My lord, in the lease that is granted, in the lease that is drafted, there is a condition that the area of the land may be reduced or increased based on availability and It other. is not a case of reduction or increase of the area of the leased property. If his petition is allowed, he succeeds. The leased property is part of subject matter. The effect of the final order would be automatic cancellation of lease deed. Then he will sue the NRDA on the ground that when the NRDA was aware of the fact that the matter is pending before the High Court, why lease was granted to him? Mr. Saurabh Kumar, you are a young officer. You should avoid these type of activities, acts, attitude. Take care in future, otherwise you may be in problem. Sorry. जस्ट बताइए मिस्टर शर्मा, आपको क्या कहना है? आप तो तलवार की धार पे हैं। Submission, a very fair submission before this honorable court. I accept on behalf of my clients before this honorable court, my lord.
we will not take an inch of the land which is the list between the list, my lord. What is the list between pending before this court, and we are not, and we are bound, duty bound to follow the honorable court order, my lord. My lord, we are here, my lord. My intervention application is only because of the fact that, my lord, if I may be, No, no, my lord, because they have got it. you brought into notice of this court that lease has already been granted in favor of Yes, my lord. NISTEC, We are Nucleus not Tech. aware of the fact, my lord, and entire upfront premium amount has been paid by us to the NRDA, my lord. Now, my lord, our difficulty is only, my lord, what we are requestfully submitting before this court, my lord, we have invested a huge amount of money, my lord, for the development of software technology park, my lord. My lord, we are making this statement, we will waive the land which is coming, which is under dispute, my lord, and we will नहीं, वो तो with पूरा liberty. सब्जेक्ट with में जो जितना भी आपको दिए हैं सब तो सब्जेक्ट मैटर का है नहीं आउट सर, ऑफ उसमें से दो ही इन्होंने एज पर एफिडेविट से दो खसरा नंबर ही आ रहा है, बाकी खसरा नंबर इज नॉट द पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस प्रेजेंट पिटिशन, my lord, we are not the person who will question the acquisition proceeding, my lord, because we are not the having the locus, but we are only having the locus with regard to the consent khasra number for which the NRD has made us issue allotted us the lease, my lord. Why we were here, my lord, because NRD has issued a blanket stay order saying that ये आपके खसरा नंबर में 5 खसरा नंबर जो है वो उचित लैंड से है, तो आप पूरे काम को बंद कर दीजिए, मतलब what we are here, my lord, only if my prayer may be seen, my lord. then देखिए you have moved an application for intervention and in that application you have made some prayer, ठीक है? My lord, my prayer is only if I may be It permitted. can't be granted. No, my lord, my In prayer is only- intervention application, how any relief can be granted in your favor? You should have filed a writ petition my lord, this is challenging not the that this dispute. is, I pray if there is any stay order passed by NRDA against you, then the right recourse available to you was to file a writ petition challenging that order. In intervention application, you will get nothing. take that liberty, my lord, because the proper because since the matter is sub judice before this honorable court, that's why I thought first, my lord, that I will. Now, you brought the facts into the notice of this court. That's nice, but you should approach And the right only the limited recourse. relief, my lord, we are not for the challenging the In amount, intervention application, no relief can be granted. my lord. That's problem, technical problem. And my lord, my lord, I got what my lord is saying, my lord, I go down to that, but only the loss, why we were here, my lord, we are stating on bar, my lord, and we will file an appropriate application before NRD also, my lord, reserving our rights to claim vis-a-vis the lands which are in dispute, my lord, for seeking the compensation back, my lord. My lord, there are 25 khasra number which were allotted to me, my lord, over 10.03 acres flat. No, move application before NRDA, And let and NRDA they will consider, Yes. but no direction can be issued I- to the NRDA to decide your representation. I understand, my lord. I will try and pursue the matter with the NRD, Yes. my lord. With that observation, my lord, my only request that when this intervention may be The pending, my learned, lord, yes, I- pending रहना है कि इसको disposal कर दें. with that direction with me. Hold on, IA number so and an application for intervention moved by NICE Nucleus Tech Consulting Private Limited. Mr. Vikram Sharma would submit that during pendency of the present petition, a lease has been granted pertaining to survey number. Sir, khasra number, my lord, there was. My lord, it has been mentioned in para number 8, my lord. बताइए Khasra number 1770, 1720, धीरे धीरे आराम से बताइए भाई. 1770, 17 बटे 17, 17 17 17, 17 20 17, 21, 17 21 18, 48, 18 48 18, 49, 18 49 18, 50, 18 50 18, 55, 18 55 18, 51, 18 51. 1868, ये देख लेना इसमें लिखा हुआ Para number 4. पैरा नंबर 4 on my lord, on 2nd of July 2021 letter of allotment था और लीज डीड एग्जीक्यूट हुई है 23 नवंबर 23. 23/11/2023. He would further submit that some survey numbers are subject matter of writ petition, the present writ petition. He would submit that the NRDA has issued an order of stay A letter dated 14 June to maintain a status quo. to letter dated 14/6/2024. 14/6/2024
has directed the intervener to maintain status quo. ओवर खसरा नंबर मेलोड नॉट ऑन ऑल लैंड मेलोड टू 1714 1849 एक से आराम से इसमें 17 1714 14 1849 1849 1851 1851 1867 1867 as well as part of खसरा नंबर 1889 part of खसरा नंबर 1889 1889. ये बोलते मैं He would submit, Mr. Sharma would submit that the intervener seeks a permission of this court to make a representation before NRDA to recall the order of status quo. इसके लिए Melot, what I will make an application before the NRDA to that we will leave the disputed land in Khasa and Mr. NRDA कैसे will be करें? permitted to Make a form- representation raising his grievance, and the NRDA may be directed to consider such representation. Mr. Hard. The intervener has moved an application for intervention, and in that application, relief has been sought to quash the order passed by NRDA, order of status quo passed by NRDA. Full stop. As the petitioner has not filed any petition challenging the order passed by NRDA, therefore no such relief as sought as prayed by Mr. Sharma can be passed. However, the intervener would be at liberty to pursue his pending representation, or he may make a fresh representation before NRDA, and it is expected that the authority concerned will consider such application in accordance with law. With the aforesaid observation, the intervention application is disposed of. Madam, आप भी next time ध्यान रखिएगा, Sorry, sir. सिग्नेचर करा दीजिएगा इनका सर. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।